अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सैटेलाइट्स आया कि हमारी यूनिवर्स में कोई भी सैटेलाइट्स रिवॉल्व करती हैं तो किस तरह रिवॉल्व करती हैं। फॉर एग्जांपल, आवर अर्थ हैविंग देयर वैल्यू ऑफ, देयर इज अ सैटेलाइट्स having their mass m with the radius of r naught, moving their speeds v naught. Consider satellites having their speed v naught with the radius of r naught revolve around the earth. Then when a body moving around a circle or a circle path, then it produces a centripetal force. Fc is equal to mv naught का square over r. This equation number 1. According to gravity, W is equal to F or F is equal to mg. This equation number 2. Comparing equation number 1 and 2. Comparing equation number 1 and 2. दोनों इक्वेशन का अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आएगी एफ वी नॉट ओवर आर इज इक्वल टू एम जी। एम एम के साथ कैंसल, ये आर इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वी नॉट हैविंग देयर एक्सप्रेशन आर जी, स्क्वायर रूट लें इसका, आर जी के साथ कैंसल, तो आर जी, but it is r known as a radius which having their value r is equal to r plus h, where r is the radius of the earth. In the center of the earth, h is equal to 0, so we can write as rg is equal to r, where small g is known as the gravitational acceleration and the capital R is known as the radius of the earth, which having their fixed value 6.4 multiplied 10 power 6 meter. After that, concluding that, we write as v naught is equal to 8 kilometer per hour, which is a required speed, which is a required expression, which is a required formula to calculate the artificial satellites having their speed v naught is equal to 8 kilometer per hour.